Assalamu alaikum guys. Today I'm here to give you a quick tour of bird aviary which is connected to strawberry farm. So here is the entrance. The entrance is beautifully decorated by natural and artificial plants. Here I'm entering the birds aviary. I hope you all will be super excited after seeing the variety of colorful birds. It's like a mini zoo of birds. Its top is completely net, and here birds are given a chance to live like natural habitat. Small waterfalls are adding natural beauty to this bird aviary. Small wooden houses are kept there for birds. You can hear the chirp of beautiful birds. A boy is carrying a bird on his shoulder. Cages, shrubs, waterfall, and nests are kept to stimulate the natural environment. पकड़ते हुए आराम से पकड़ना तोड़ मोड़ नहीं देना एक मिनट इधर से बना दो ना फिर यहाँ से मुझे नहीं It is also one of reptile species. It looks like a big lizard. यार लड़के की तरह बदतमीज अबे शौक ही क्या है यार ये देखो उनको शौक होता है और वो नजर नहीं आता ये ब्लैक बोर्ड देखो कितना हाँ ये मैंने अभी देखा मैंने एक पाप रखा हुआ था यहाँ मैंने पिक्चर बनाई यहाँ Few plants are also there to give it a natural look. You can see birds sitting on their branches. माजिद देखो पैरेट माशाल्लाह ये तो मैंने देखी कोई नहीं पता ये देखो ये इनके नेस्ट बर्ड्स के नेस्ट Here you can see many nests for the birds. ये तो मेरा सारा
मोबाइल डाटा इसमें खत्म हो जाना है। हाँ? चलो चलो वो पीकॉक पीकॉक ये देखो Beautiful corner of the Aviary is where peacock and peahen are sitting. वो देखो वो बड़ा Guys, I have no words to explain the beauty of this Aviary. ओह माशाल्लाह थैंक यू क्या मतलब ये तो बड़ा डेंजरस है यार ये तो अंदर बहुत और कुछ है हमें पता नहीं चल रहा समझ आई अच्छा तुम कहाँ गायब हो गई थी अच्छा एक मिनट मुझे अच्छा एक मिनट यहीं रुको माजूद लोग नीचे आएंगे मैं उनको मालूम पूछ चलूँगा अपना माना मोबाइल में अपने पुराना हमारा गिर गया Guys, I tried to show you every inch of the Aviary so you'll feel like you are recording this video. Guys, here you can see this angry bird. I hope you all like this video. Please do not forget to like, share and subscribe. And I aim for 3 likes.